Hello guys, hello everyone. Today we are going to learn about the chapter 4 of class 12 chemistry. चैप्टर 4 है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 4 जो कि है हमारी केमिकल काइनेटिक्स एंड इट इज वेरी क्रूशियल चैप्टर ऑफ क्लास 12. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी मेकिंग एनी डिले. सो बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं. सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय दी केमिकल काइनेटिक्स. इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ये ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है. फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, is the branch of physical chemistry that deals with the study of the rate of chemical reaction. जहाँ पर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन ओकर, और कौन कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन dr/dt change in product in unit time, right? So rate of reaction, that is decrease in concentration of R by time taken, or that is equal to increase in concentration of product by time taken, that is equal to, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, माइनस डेल्टा आर बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डी टी. द नेगेटिव साइन इन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, वो क्या इंडिकेट करता है? The negative sign in the rate of reaction indicates the decrease in the concentration of reactant. Decrease हुआ concentration of reactant and gives the positive value of the rate. Unit of rates are mole per liter per second or atoms per second in gaseous equation. The above reaction of rate reaction gives the average rate of reaction. उसके बाद हम पढ़ते हैं instantaneous. ये जो what is this is average रेट ऑफ रिएक्शन. लेकिन वी आर डीलिंग विद दी, नाउ हम डील करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज दी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर होगा, एंड मेजर एज वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट यहाँ पर हो जाएगा आर रिएक्टिंग गिविंग प्रोडक्ट. सो फॉर जनरल रिएक्शन इसका ग्राफ कैसे होगा देखो. सो यहाँ पर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लिखते हैं वाई एक्सिस पर और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और जो टाइम हम लेंगे उसको हम पॉजिटिव एक्सिस पर लेंगे. तो यहाँ पर से जो टाइम है T1 T2 T3, यहाँ पर C1 C2 कंसिडरेशन. यहाँ पर से पर्टिकुलर जो स्लोप होगा, स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा. ओके, उसको हम ऐसे लिखते हैं नेगेटिव ऑफ स्लोप माइनस डी आर बाई डी टी. उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट का, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट. दिस वाज अबाउट द कंसिडरेशन ऑफ ये रिएक्टेंट के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. सो भाई यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे ना भाई. वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट. कंसिडरेशन प्रोडक्ट को लेंगे वाई एक्सिस पर और यहाँ पर टाइम लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा. ओके, यहाँ पर डेल्टा बी बाई डी टी सी टू माइनस सी वन बाई टी टू माइनस टी वन, यहाँ पर माइनस सी टू माइनस सी वन टी टू माइनस टी वन. इसको आप याद रखना है दोस्तों. ओके, स्टेनलेस रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी बाई टी. स्टेनलेस रेट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाई ड्राइंग टेंजेंट एट टी ऑन ईदर साइड ऑफ द कर्व फॉर कंसिडरेशन ए और बी वर्सेस टाइम एंड कैलकुलेटिंग द स्लोप. तो आर स्टूडेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ स्लोप फॉर आर. ओके, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे फॉर प्रोडक्ट, नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट्स के लिए हम पॉजिटिव लिखेंगे. जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, क्या जनरल रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? फॉर जनरल रिएक्शन ए प्लस बी बी गोइंग टू सी सी प्लस डी टी, आर एवरेज दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई ए. यहाँ पर से ये नीचे आ जाएगा. ओके, डेल्टा ए बाई डी टी माइनस, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन आएगा यहाँ पर, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा बी बाई डेल्टा टी. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा. तो दिस इज वेरी सिंपल एज इट इज. और यहाँ पर से इंस्टेंटेनियस की केस पर एंड यहाँ पर इंस्टेंटेनियस केस पर सिर्फ यहाँ पर एक चेंज होगा, डेल्टा की जगह पर डी आ जाएगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द general expression for rate of reaction. Next, we are going to discuss about the factors affecting
द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट आयनिक सब्सटेंसेस रिएक्ट मोर रैपिडली देन द सब्सटेंसेस विद कोवैलेंट बॉन्ड। जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, द रिएक्ट आयनिक सब्सटेंसेस ionic substances react more rapidly than the covalent substances. This is because why? Because the ions are immediately available in aqueous solution. जो ions होते हैं, they can be immediately available in aqueous solution or dissolution, hence react rapidly. But covalent molecules consume part of energy in breaking up bonds because the capacity of breaking bond is very high in case of ionic bond. Breaking of bonds is high. Breaking bond capacity is high due to free ions. But in case of covalent bond, much more energy is required. More energy is required to break the bond. More energy required. Second thing is about the concentration of reactants. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. So rate होता है directly proportional to the concentration of reactant. Concentration of reactant. Temperature. Rate of reaction increases with increasing temperature. That means rate of reaction directly proportional to temperature also. Presence of catalyst. Catalyst का presence. In the presence of catalyst, the rate of reaction generally increases and the equilibrium state is attained quickly in reversible reaction. कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर रेट रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टर, द स्मॉलर दिस पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज हमारा स्मॉल होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया एंड फास्टर द रेट। स्मॉलर द साइज क्या बोलता है यार, स्मॉलर साइज होगा तो ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर सरफेस एरिया एंड दैट इज फास्टर रेट रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। Radiation. There are many reactions which if do not take place at all or quite slow in the depth but take at a considerable speed. Considerable speed पर होता है when exposed to sunlight, जब हम sunlight को expose करते हैं, ultraviolet radiation. Such reactions are called photochemical reaction. Photochemical means क्या? Photo means light. जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट और केमिकल। सो एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, फोटोग्राफी एक्सेट्रा। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर हाइपोथेटिकल रिलेशन, एक हाइपोथेटिकल रिलेशन के लिए a plus b giving rise to products, the rate is directly proportional to a to the power m and b to the power n. So rate will be equal to k। तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पर k इंसर्ट हो जाएगा, k a to the power m and b to the power n। पर k इस क्या है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट। A equal to B, one number greater then rate equal to K. When क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, condition for rate equal to K. That is the condition for rate equal to A कब होगा? When the reactant A is equal to the concentration of A equal to concentration of B and that is equal to 1 mole per liter, then the condition for rate equal to K. Since rate constant may be defined the rate of reaction when the concentration of each reactant in the rate of reaction, इसको याद रखेंगे। क्या बात है भाई, रेट क्वेश्चन में भी डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each reactant, जब concentration हर एक reactant concentration in the reaction क्या होगा, यूनिटी होगा, यानी कि 1 होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन it may be defined as the sum of powers of concentration of the reactant in the rate law expression। जो concentration of reactant पर जितने है पावर है, उस concentration of reactant पर जितने पावर है उसको हम ऐड करेंगे, तो that will coming out to the rate of reaction। Let rate equal to k a to the power m, b to the power n, c to the power p। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, m plus n plus c, सॉरी p।
उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं अबाउट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या क्या यूनिट्स होते हैं फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के लिए ए गिवन यूनिट प्रोडक्ट रेट इक्वल टू के e to the power n, के इक्वल टू रेट e to the power n, consideration by time into 1 by consideration of n, so consideration 1 minus n time inverse. So, considering SI unit of consideration as mole per liter inverse and time as second, the unit of K equal to mole per liter inverse 1 minus N S minus. So, examples of zero order reaction. What are the examples of zero order reactions? So, engines release reactions and reactions which occur on metal surfaces. Decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface. ये भी होता है। हम platinum लेंगे 1130 केल्विन लेंगे, तो यहाँ पर से जो होगा दैट इज इक्वल टू कंबशन गैसेस अमोनिया H2 gas plus Cl2 gas given as 2H2 2CSCl IV 2HI gas given as 2 chloride H2 plus I2 gas. Unit of K equal to mole per liter per second, right? Unit of K that is equal to mole per liter per second. Examples of fast reaction. All radioactive disintegrations are of fast reaction. All जितने भी radioactive disintegrations हैं, that is of fast reaction. Decomposition of sulfur chloride. Therefore, change in concentration of retin is not after the value of K. Example of second order reaction is CH3CO C2H5 plus NaOH, CH3CO C2H5 NO plus O3 NO2 plus O2. Example of third order reaction क्या है 2NO plus O2 2NO2 2NO plus Br2 given 2NO Br. Unit of K equal to liter per mole per second. यहाँ पर unit है liter square per mole square per second. Elementary reaction. The reaction which is complete in one step. A reaction which takes place in one step, that is called as elementary reaction. When a sequence of elementary reaction gives the product, the reaction is called a complex reaction. What is molecularity? The number of reacting species, molecules that may be ions, that may be cations, taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring equivalent reactions. Reactions are classified as unimolecular, bimolecular, intramolecular, or molecularity 1 to 3 respectively. So it is a unimolecular reaction है, क्योंकि यहाँ पर जो molecularity है that is equal to 1 और molecularity क्या है 2 और molecularity है 3. Number of reacting species taking part in elementary molecular reaction. The probability of more than 3 molecules colliding simultaneously is rare. Therefore, molecularity of a reaction does not extend beyond 3. क्वेश्चन यहाँ पर ये भी फ्रेम हो सकता है why the molecularity is not extending up to 3. Molecularity can be defined only for limited action and has no meaning for comparison. Intermediates. The species intermediates क्या होता है? The species which are produced in one step and consumed in another are called intermediates. Mechanism of reaction. यहाँ पर हम पढ़ते हैं what mechanism of reaction. ये क्या क्या mechanism हम पढ़ेंगे reaction के बारे में, उसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, mechanism of reaction. Mechanism. A series of elementary reactions proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction. The overall rate of reaction is controlled by the slowest step in the reaction called rate determining step, RDS. ये जो step होता है that is responsible for this reaction. Okay, इसको हम कहते हैं rate determining step, right? Consider the reaction. एक हम reaction लेते हैं जैसे कि 2H2O2 2H2O2 2H2O plus O2. Now the rate equation for this reaction is found to be rate equal to minus 1 by 2 d by dt of 2H2 लेंगे, तो K into concentration of H2O2 लेंगे. Evidence shows that this reaction takes place in two steps. Okay, intermediate form होगा, यहाँ पर से fast होगा. The first step being slow is the rate determining step. Thus the rate of reaction of will determine the rate of reaction. उसके बाद हम दोस्तों पढ़ते हैं अबाउट pseudo first order reaction. What do you mean by pseudo first order reaction? A reaction is not truly for first order, but under certain conditions becomes first order is called pseudo first order reaction. For example, the inversion of cane sugar is a bimolecular reaction, but it is first order reaction as concentration of H2O is quite large and does not change appreciably. See, यहाँ पर cane sugar, inversion of cane sugar, inversion of cane sugar यहाँ पर लिखो inversion
of cane sugar. Inversion of cane sugar. It is a biomolecular reaction, but because the concentration of H2 is quite large, it does not change appreciably. Hence, it is a pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Zero order reaction. In such reaction, the rate remains constant throughout the course of reaction. There does not change in concentration of reactants. इसको कहते हैं zero order reaction. It occurs in heterogeneous system, whereas in the reactant is absorbed on the surface of the catalytic crystal. Here it is converted into product. The fraction of the surface of the catalyst covered by the reactant is proportional to this concentration at low values, and the rate of reaction is observed further. However, after certain concentration limit of the reactant, the surface of the catalyst is fully covered, and the concentration of the reactant further increase जाता है. No change in it takes place. Thus, rate becomes independent of concentration, and the order reaction becomes zero. Integrated rate law for zero order reaction. This is one of the very important topic. Consider a generic order equation of radiative product. As it is a reaction of zero order, minus dr by dt k r नॉट इक्वल टू के. सो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो माइनस आर इक्वल टू के टी प्लस सी हो जाएगा. तो सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो, तो सी इतना आ जाएगा. सब्सटेंस द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन यहाँ पर हम मिल जाएंगे, इतना मिल जाएगा. के इक्वल टू वन बाई टी आर नॉट माइनस आर जीरो. तो यहाँ से हम जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वेरिएशन ऑफ ऑसिलेशन में टाइम फॉर जीरो जीरो वाला डायरेक्शन इतना आ जाएगा, राइट. Half life of a reaction. It is the time in which the concentration reactants is reduced to half. Half life equal to t equal to 1 by 2 r naught by 2. Substituting the values equation we get t half equal to direct proportional rate of concentration में direct proportional होता है. तो इसका जो ग्राफ आएगा that is coming to be पूरा straight आएगा. First reaction. In this class reaction, the rate of reaction direct proportional to the first reaction rate equal to k reactant. Integrated rate of first order reaction versus general first order reaction related products. यदि reaction of follows first reaction, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पर से t इक्वल टू 2.303 by k log r naught by r, where r is the initial concentration and r naught is the initial concentration and r is the final concentration of the equation. Half life period for first reaction कितना t half equal to 0.693 by k. R naught by 2 हो जाता है 0.693 by k. Okay. Since no concentration term is involved, therefore t equal to 1 by 2 for first reaction is independent of initial concentration. ये क्वेश्चन आता है t half of first order reaction independent of initial concentration. Indian rate equation for gaseous equation consider typical first order gas phase reaction AG, and PI with the initial concentration and A and PI with the total pressure at T, PA, PB, PC with the partial pressure of A, B, C respectively at time T. Total pressure equal to Vt equal to PA plus PA plus PC. If X atom with the decrease in pressure of A at time T and one molecule of B and C being formed, the increased pressure of B and C will be, यहाँ पर से increased pressure क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. ओके. इस इक्वेशन को सिंपली याद रखना 2.233 log PA by PA if it is gas. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, कैसे हम ऑर्डर रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे. There are many methods available for the determination of order reaction. Graphical method, initial rate method, integrated rate law method. Graphical method. This method is available for those reactions where only one reactant is involved. जब एक ही reactant involved है उसको हम यहाँ पर graphical method को डिफाइन कर सकते हैं. For zero order reaction, the graphical method is about to be like this. Okay, ऐसे आ जाएगा. For first order reaction, rate ऐसे आएगा. Second order के लिए भी ऐसे आएगा. Third order के लिए भी ऐसे आएगा. Concentration में यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर concentration में क्यूब हो जाएगा. इतना इसी डिफरेंस है, right? Initial rate method. This method is used to determine the rate of reaction in such cases where more than one reactant is involved. जब यहाँ पर more than one reactant involved होते हैं, it involves determination of order reaction with respect to each reaction. For this order of a particular reactant is determined. A series of experiments are carried out in which the concentration of that particular reactant is changed, but the concentration of the reactant is kept constant. In each experiment, the rate given for the plot of the concentration of distance. Similarly, concentration of another reactant is varied, keeping the concentration of the reactant given. The data often are then compared to see how the initial rate depends upon the initial concentration of each reactant. Thus, on the basis of the results, the form of the rate of law is determined.
Integrated rate law. There are integrated rate law equations which are very convenient to understand the relation in consideration with time. For different order reactions, after starting the consideration at various intervals of time, the data are put in all the integrated rate law equations one by one. The expression which gives a constant value of rate constant beside the order of the reaction. Zero reaction के लिए k equal to r naught minus r by t, particularly 2.33 by t log r naught by r. Temperature dependence of rate of reaction. Temperature coefficient. It is defined the ratio of the rate constant of the reaction at two temperatures differing by 10 degrees Celsius. Temperature coefficient is equal to rate of constant at T plus 10 rate constant at T. For most of the reactions, temperature coefficient lies between 2 and 3. Collision theory. It is defined as the total defined as the total number of collisions for unit volume for unit time. Effective collisions. Collisions which relate to the formation of products इसको हम कहते हैं effective collision. Iteration F into Z. Z is the collision frequency. Z क्या है? Collision frequency है. F is the fraction of collision. The fraction of collision. Threshold energy. The minimum energy that required must possess in order to undergo effective collision. उसको हम कहते हैं threshold energy. इतना ही नहीं. Activated complex. The arrangement of atoms corresponding to energy maximum during the course of action is called activated complex or transition state. The activated complex has partial reaction character and partial product character. Certain molecules activated complex and product complex. Formation of activated complex from S2 and I2 during is a formation. Characteristics of an activated complex. क्या characteristics होगा activated complex का? The Federation energy of the activated complex is maximum. The activated complex is transient existence and breaks off at different rate of to form the products. Exothermic reaction. Activated complex यहाँ पर जो क्या होगा increase होगा यहाँ पर activated complex active होगा. Okay. Endothermic process. Exo means energy released. Energy released. Endo means energy required. Energy required. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रहते हैं प्रोडक्ट यहाँ पर से लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट नीचे होता है ओके एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेशन एनर्जी इट इज द difference between sensation energy and the average energy possessed by the reacting molecules. Activation energy is equal to sensation energy divided by minus average energy possessed by the reacting molecules. Reactants equal to activated complex plus RNA equation. That is also very important topic. It relates rate constant with temperature in the following way: K equal to AE minus EA by RT, where A is constant called frequency factor, EA is energy of the activity, ln K equal to ln A minus EA by RT, log K equal to log A minus EA by 2.33 RT. A plot of log KPS 1 by T is straight line, which slope is minus EA by 2.33 R and intercept is log K. If the K1 and K2 are the rate constant at two temperature T1 and T2, then log K1 equal to log A minus EA 2.303 by RT1 log T equal to इतना. Subtracting 1 from 2 get माइनस करेंगे तो log K2 minus K1 equal to इतना आ जाएगा. ओके. Effect temperature on rate of reaction. क्या effect है? Increases temperature of reaction increases the fraction of molecules which collide with energy greater than EA. It is clear from the diagram alongside that with 10 to the power 0 rise in the temperature, the area showing the fractions of molecules having energy equal to or greater than the equation energy gets almost double, leading to almost doubling of the rate of reaction. देखो यहाँ पर distribution cost showing temperature dependence of rate of reaction. यहाँ पर fraction of molecule ये है ओके. तो यहाँ पर से क्या होगा T plus 10 हो रहा है ओके. energy of the activity the ratio fraction of the additional molecules which is greater than T plus 10. Catalyst. A catalyst is a substance which alters the rate of reaction without itself undergoing any chemical change at the end of the reaction. For example, catalyst MnO2 increases the rate of reaction of potassium chloride to form the rate extent. According to intermediate complex theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in an intermediate complex. This is a transition. It is believed that the catalyst provides an alternate pathway by reducing the activation energy. Okay. It is clear from the RNA equation that K equal to AE minus A by RT, that lowers the value of the activation energy, faster will be the rate of reaction.
फॉर एग्जाम्पल SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3 द प्रेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, characteristic of a catalyst. It can only catalyze the spontaneous reaction but not the non-spontaneous reaction. It does not change the equilibrium constant but only helps maintaining the equilibrium faster. It can catalyze both forward and backward reactions to mean to the same extent to maintain the equilibrium state in case of reversible reaction. It does not alter the free energy of the reaction. A small amount of catalyst can always catalyze a large amount of reaction. Collision theory of chemical reaction. This is the last part of this chapter, and we are going to discuss the numerical acceleration bank exercise in the next video. Okay. So only effective collisions bring out a chemical reaction. Only जो effective collision होता है वो bring करता है chemical reactions को. The collisions in which molecules collide with sufficient kinetic energy and proper orientation so as to facilitate breaking of the bonds between reacting species and formation of a new bonds. The forms products are called effective collisions. तो basically हिंदी में बताऊंगा तो collisions क्या होता है? Only effective collisions जो होता है that give rise to chemical reaction. जो कोलिजन्स जहाँ पर कोलाइड होता है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन से, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन मस्ट बी देयर। ओके, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओके, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए प्लस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी will give rise to breaking bonds between the reacting species and formation of, यहाँ पर से in formation of new bonds to form products called effective collisions. In collision theory पर क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी भी होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर डिटरमाइन द रेट ऑफ रोटेट कोलिजन्स एंड हेंस द रेट रिएक्शन रेट रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? पी जेड ए बी ई माइनस ई बाई टी। जेड ए बी इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेटर ए एंड बी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, पी इक्वल टू मोलरिटी। इट टेक इनटू अकाउंट्स द फैक्ट दैट इन ए कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेटेड। मोलरिटी फैक्टर है ये बाटी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन ये। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट आएगा इस वीडियो का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो रिएक्शन टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई के। ओके, उसके बाद एंड टी हाफ इक्वल टू आर नॉट बाई टू के फॉर ए फर्स्ट रिएक्शन टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर एंड टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू आर नॉट बाई 2n, एन हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन आर नॉट बाई आरएनएस इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़े अबाउट आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मूला है आरएनएस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई माइनस सी बाई आर टी, और के इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए इक्वल टू आरएनएस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए इक्वल टू एक्सप्रेशन एनर्जी, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, टी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हो आरएनएस इक्वेशन, इसको याद रखना है। लॉग के टी बाई के वन से ए बाई 2.3 आर टी टू माइनस टी वन टी वन माइनस टी टू पर के वन इक्वल रेट कांस्टेंट इन टी वन के टू इक्वल रेट कांस्टेंट टी टू, ए इक्वल टू माइनस 2.303 into r into slope in a product of log k based. This was all about the video. Okay.